बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी जी के ऊपर लिखी इन पंक्तियों को तो आप लोगों ने सुना ही होगा। महारानी लक्ष्मीबाई जी का जीवन अमर देशभक्ति और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। भारत यूँ तो अंतहीन स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि रही है, किंतु हम कुछ चर्चित नामों को ही जानते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे देश के कुछ गुमनाम नायकों के बारे में। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महापुरुषों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, किंतु आज हम उनके उस बलिदान से अपरिचित हैं। जैसे कि बिरसा मुंडा जी, यह एक आदिवासी परिवार से थे। इन्होंने बिहार और झारखंड में विकास तथा भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया है। पुरुषों की ही तरह हमारे देश की महिलाएं भी कुछ कम नहीं है। जी हाँ, हमें आज़ादी 1947 में मिली, किंतु क्या आप यह जानते हैं कि 1857 से ही इसके प्रयास किए जा रहे थे। अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ तथा मंगल पांडे जी का साथ देते हुए भारतीय विद्रोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या यह आप जानते हैं कि मेजर लक्ष्मी सहगल सुभाष जी आजाद हिंद फौज में सक्रिय थे। अब मैं अपने शब्दों को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहता हूँ। हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्हें कोई मेडल या कोई इनाम नहीं मिलता, हम उनका नाम तक नहीं जानते और ना ही उन्हें पहचानते हैं। बस वो वतन के झंडे पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जो देश के लिए शहीद हुए उन्हें मेरा सलाम है। अपने लहू से देश को सींचा उन बहादुरों को मेरा प्रणाम है। Happy Republic Day. A very warm good morning to everyone present. Today, I, Shreya Saroj of class 9T, is going to present a speech about a courageous woman, a great freedom fighter, and an outstanding poet named Sarojini Naidu. She was one of the most famous freedom fighters and played a pivotal role in freeing our nation from British imperialism. She was also a great orator, crusader for equality, and poet of modern India. Sarojini Naidu was born on 13th February 1879 in a well-known Bengali family in Hyderabad. She is regarded as the Nightingale of India because of her rich and melodious poetry and themes. She joined the freedom struggle after the partition of Bengal in 1905. Later, she met Gopal Krishna Gokhale and he urged her to use her intellect for the welfare of India. So, Sarojini took a break from writing and became active in the struggle for freedom. In the year 1916, she fought for the rights of farmers in Champaran, Bihar. She was jailed for this step of hers by the British government. She was an active participant in the civil disobedience movement and was sent to jail along with other leaders due to it. Sarojini left a lasting impression on women in India. She was the first Indian woman to become the president of Congress. She was the first woman to assume the governorship of a state. She died of a cardiac arrest at the age of 70. She was a lady full of energy. She was sweet, intellectual, fearless, with a charming personality. She was a prominent leader as well as a speaker with humor and emotions. She was a great freedom fighter and will always be remembered for her tremendous work. All present here. I, Sanjeevi of class 9, is here to present a speech in the honor of Rani Lakshmibai, one of the most famous female freedom fighter and also a leading figure of the revolt of 1857. Rani Lakshmibai, famously known as Jhansi Ki Rani, was born in Moropant Tambe and Bhagirathi Sapre on 19th November 1828 and was named Manikarnika Tambe. Manikarnika's father worked for Peshwa Bajirao II in the district of Bittur. Manikarnika or Manu was educated at home and was taught to read and write and was much more independent than any other child of her age. Her skills also included shooting, horsemanship,
fencing, and mala khamba, which she learned with her childhood friends Tantya Tope and Nana Sahib. Manikarnika was married to Maharaja Gangadhar Rao Nevalkar in May 1842 and there was named Rani Lakshmi Bai. She gave birth to a boy in 1851 named Damodar Rao who died 4 months after his birth. Then the Maharaja adopted a child called Anand Rao and renamed him Damodar Rao. After the death of Maharaja in November 1853, as Damodar Rao was an adopted child, the British applied doctrine of lapse, rejecting the claim to the throne of Damodar Rao. This was the time where her real journey started, the real fight for her pride, her nation. She objected them sternly, saying, "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी." She defended Jhansi against the British troops. According to the sources, Hugh Rose, commanding the British forces, demanded the surrender of the city, and if this was refused, it would be destroyed. But the Rani denied this by issuing a proclamation, "We fight for independence." In the words of Lord Krishna, "We will, if we are victorious, enjoy the fruits of victory. If defeated and killed in the battle, we will surely earn an eternal glory." The bombardment of Jhansi began on 24th March but was met with a heavy return fire and the damaged defences were repaired. During the battle with Tatya Tope's forces, part of the British forces continued the siege. Determined resistance was encountered in every street and in every room of the palace. The Rani withdrew from the palace to the fort and भरा नहीं है भावों से जिसमें दीवार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। नमस्कार, मेरा नाम कमला पांडे है, मैं कक्षा 10 साल की छात्रा हूँ और आज भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला दिन। आज ही के दिन भारत को अपना संविधान मिला, यानी आज भारत का गणतंत्र दिवस है। और आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी अगर हम यहाँ पर बैठ के आपसे बात कर पा रहे हैं तो वो हमारी सेना व स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से। और उसी में एक बहुचर्चित नाम रहा भगत सिंह जी का। भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 में पंजाब में हुआ। भगत सिंह जी के पिताजी व उनके चाचा जी शुरू से ही आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देते आ रहे थे, जिसकी वजह से भगत सिंह जी ने भी मन में ये भावना जागृत हुई कि हम कैसे देशभक्ति के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। भगत सिंह जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, किंतु अहिंसक प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने बाद में नौजवान भारत सभा बनाई। चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मिलकर उन्होंने बहुत काम किया। पंजाब की युवाओं को बताया कि कैसे हम आज़ादी में अपना योगदान दे सकते हैं। 1929 में अपने को पकड़वाने के लिए उन्होंने संसद में बम फेंक दिया, जिसके बाद 23 मार्च 1931 में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुना दी। यह हमारे लिए बहुत ही कष्टदायी दिन था। यह ब्रिटिश शासन की क्रूरता को दर्शाता हुआ दिन था। धन्यवाद। Fighters of India who gave to the independence journey, but their names disappeared in the darkness. Our freedom fighters fought against the British for our independence. Important freedom fighters of India are Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Lal Bahadur Shastri, and several more. But many freedom fighters were apparently should not have heard. Most of them lost their lives in acquiring independence for India. We call them the unsung heroes of India. Here are some freedom fighters you honestly have not heard of. Begum Hazrat Mahal. She was a vital part of the 1857 Indian rebellion after her husband was banished. She took charge for hours
and even seized control of Lucknow during the rebellion later. Begum Hazrat Mahal had to retreat to Nepal where she died. Matangini Hazra. Hazra was a part of the Quit India journey and non-cooperation progress. During one procession, she proceeded to improve with the Indian flag even after being shot. She kept yelling Vande Mataram till she moved to her end. Other unsung heroes are Bikaji Kama, Peer Ali Khan, Aruna Asaf Ali, and many more. There are so many characters who play a most important role in India's independence fight. But today we forget those people, so it is time to pay tribute to all those great people. Thank you. सुप्रभात। मैं वैभव पांडे कक्षा 12 का छात्र आपके समक्ष अपना विचार स्वतंत्रता संग्राम की नाम नायक पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों के चंगुल से या शासन से मुक्त हुआ था। देशभक्ति भारत और व्यक्ति की अंतर्निहित होती है। ये किसी प्रलोभन से उजागर नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रबल समर्थकों ने इतिहास के पन्नों में कई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम